back with the video. Today is 8 August 2023. Sorry, 9 August 2023. And we are off to Shasank. Slide right onto State Highway 5. कैसे लग रहा है सर आपको? It's my first solo trip, so I'm quite enjoying it. It's 30 kilometers up from Shillong, and you can see the eye. So like I'm taking. So we are at the Marok viewpoint. And surprising thing, you can see the amazing fog. जो मुझे वर्षों से ऐसा fog चाहिए था. I traveled so many places like Darjeeling and all to get this fog, जो कि मुझे इधर मेघालय में आके मिल गया. हमने समुद्र में नहाया, वाटर पार्क में नहाया, बट में नहाया. वाटरफॉल डूड. Welcome back to the channel, everyone. That's you back with the video. Today is 8 August 2023. Sorry, 9 August 2023. And we are off to Shasank. To note this, the most beautiful and sexy spot of India. And we are off towards Shasank. हम लोग शिलोंग से भी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं. हम कहाँ पे जा रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? भैया को फर्स्ट सोलो ट्रिप है. It's my first solo trip, so I'm quite enjoying it. I got a partner now. My pleasure to have a partner like him. As you see, कुछ बताने का अलग से है नहीं. We just take a stop because 20 किलोमीटर तक राइड किया. 20 किलोमीटर in hills are like more like 30 to 40 kilometers. Behind me there is the नदी जा रहा है, कोई पहाड़ी नदी, and हम लोग और ऊपर जाएंगे. Slide right onto State Highway 5. State Highway 5 for 5 kilometers. It's 30 kilometers up from Shillong, and you can see, say hi. So like आप देख सकते हो roads. Actually मैं riding कर रहा था, but due to some reason मैं इनको दे रहा हूँ. It's quite foggy here. Yeah, and he's experienced. So this is the Marok viewpoint. We are here, but due to fog, everything is disappeared. That's amazing. That's amazing. So we are at the Marok viewpoint. There is a waterfall and there is a bridge. You can see. And surprising thing, you can see the amazing fog. जो मुझे वर्षों से ऐसा fog चाहिए था. I traveled so many places like Darjeeling and all to get this fog, जो कि मुझे इधर मेघालय में आके मिल गया. कैसा लग रहा है सर आपको?
awesome yaar over here. It's too foggy. See this. So मैं अगर नहीं आता ना, I'll miss something. ये हम जा रहे हैं लाइफ का मजा उठाने. आप लोगों को भी उठाना है तो आप लोग जरूर से आओ. अगर आप आ नहीं पा रहे हो तो नो वरीज, मैं हूँ ना, मैं घुमा रहा हूँ आपको. तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. और ऐसा जगह कहाँ मिलता है? मेरे ब्लॉग्स में मिलता है डूड. लास्ट पूरा एक हफ्ता दुबई में था. दुबई इज दुबई, बट इसका कोई मुकाबला नहीं होता है. 1000 टाइम्स बेटर देन दुबई. नेक्स्ट टाइम जाऊंगा दुबई वाले पूरा मत माना. ओके. सो एज यू सो हमने क्या शराफत की है. नाउ वी आर हैविंग टी. वाटरफॉल के जैसे ऑपोजिट में रेस्टोरेंट है. सो अगर आप सुबह निकल रहे हो एंड वाटरफॉल आने के बाद थक जाते हो, सो यू कैन हैव फूड. सो वी ऑर्डर फॉर छोले भटूरे. एंड मैं चाय तो नॉर्मली पीता नहीं, बट बहुत ठंड लग रहा था एंड उधर ना पूरा भीग गया हूँ. सो वार्म मैं चाय पी रहा हूँ. एंड इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद we are going to Garden of Caves. So today all will traveling caves, waterfall, and this was totally out of my plan. So thanks to special this भैया. नाम मैं भूल जाता. So I am Shasank. शशांक भैया को बहुत बहुत शुक्रिया. We came across like 50 kilometers from Shillong within 2 hours. अभी 10:30 हो रहा है. And this is Garden of Cave मेरे पीछे. And ये जो पीछे पहाड़ देख रहे हो ना, this is all Cherrapunji's hills. And this is so amazing. मतलब आपको आना ही चाहिए. तो शशांक भैया नीचे गया है and I'll also follow him. And he's such an amazing person. मतलब इतना उनको नॉलेज है ना, पूरा एकदम रिसर्च वगैरह करके आया है. I also do research but इतना तो अच्छे से नहीं करता हूँ. चलते हैं. So that's the starting point of this cave place. मतलब वाटर पार्क्स इन लोगों से इंस्पायर्ड होकर बनाते हैं ऐसे. This is the part of caves from where we can start and अब देख सकते हो. तो I don't like caves. मुझे waterfalls पसंद है, caves तो पसंद नहीं है. बट यार so let's explore. पानी टपक रहा है. वही हो जाता, हम लोग इतना आर्टिफिशियल में रह रहे के ना, जब नेचुरल चीज़ भी हमें आर्टिफिशियल लग रहा है. कि हमें पैसे के लिए मुझे वाटर पार्क जैसा लग रहा था, बट दिस ऑल आर नेचुरल फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द नेचर. इट्स अ गार्डन ऑफ केव्स, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ केव्स ओवर देयर. जस्ट लाइक केव्स कैसे, मतलब देख लो एक चीज़. देयर इज अ रोड, ओके, तो ये चट्टान इधर गिरा हुआ है, अंदर से वो गुफा बन गया. तो ऐसे सब कुछ नेचुरली केव्स बनाए इधर. जाता है. टन का पानी से फेस वॉश किया है? नहीं तो अभी कर लेते हैं. तो हो गया फेस वॉश. मेरा प्लान था आगे रहने के बाद मेरा ये भीग जाएगा. बट एनी हाउ दिस वाज द पॉइंट 3 ऑफ गार्डन रॉक केव गार्डन ऑफ केव. पॉइंट 4 एंड हियर वी आर गोइंग. इधर कुछ लिखा हुआ है. ओके, सी द रियल केव्स. ओके, नाइस. Oh gosh, this is crazy, man. Oh, so we have covered 2 points. First is Modo Dimpet Valley Viewpoint. Currently we are at Garden of Caves, which we have already completed now. Next we are proceeding to Arwa Cave. Then there are 2 beautiful waterfalls, Dainthen and D Sadong. Then we will be proceeding to Mosmi Cave. Then the famous Seven Sister Waterfalls. Points. Oh god, I'm so excited. We'll be finishing it off with a very beautiful waterfall. It's Kinrem Falls.
just bought the shoes from this shop, and we're at Shora supermarket, and there is an amazing shopping center. If you guys want to buy something from Shora, or if you come Cherrapunji, you can come this shop and buy. So that's my new shoes. Hope ये float ना कर जाए. आज सुबह से मैंने मेरा सेल्फी स्टिक घुमाया, मेरा रिस्टबैंड का वो घुमाया, देन मेरा सनग्लास उड़ गया. नाउ लास्ट में किस्सा क्या हुआ कि हम लोग इतना बिजी हो गया वीडियो शूट करने में, नॉट हम लोग, मैं, मेरा शू बह के चला गया. थैंक गॉड आई गॉट दिस शू. नाउ चलते हैं आरवा केव में. एंड ट्रस्ट मी शशांक भैया अगर नहीं मिलते ना, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं कि कहाँ क्या, मैं तो वही 7 सिस्टर पूछ के खुश होकर घर चला था. बट या इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस. कभी कभी कुछ घूमना अच्छा होता है, नया हो जाता है. कैन यू सी दैट? दैट इज मेघालय डूड. कहीं से भी आपको फॉल्स देखने मिल जाएगा. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिस मैन हु टेक्स मी हियर. इस साल हमने समुद्र में नहाया, घर में नहाया, बाटा में नहाया. नाउ इट्स टाइम फॉर